traced back to prehistoric times. In India, artisans have been turning buffalo bones into works of art since at least the 16th century, when royals would commission works like this in ivory. But more recently, a scarcity of materials and legal restraints have pushed people away from the craft. We visited Lucknow, India, to see how one group of bone carvers is still standing. Jalaluddin Akhtar stores bones out on the roof of his home. He has enough stock to last him 6 months. कभी खराब नहीं होती है। हम इसको अगर 100 साल रखेंगे तो 100 साल खराब नहीं होगी। These were once widely available when traders sold them out of giant warehouses. But now, Jalaluddin has to get them from butchers instead. Down in the workshop, Jalaluddin cuts the bones into smaller pieces. He learned the art from his uncle in 1980. It's been in his family for over 50 years, and in his lifetime, he's seen the industry change. देखिए पहले जो है जब हमने काम ये सीखा था तो बहुत अच्छा काम था। ये अभी इधर जो है 10 सालों में थोड़ा बहुत डाउन हो गया है काम। इतना डाउन हो गया है कि समझ लीजिए कि 70% काम खत्म हो चुका है। Jalaluddin chops down the bone to make it straight. इसको काटते काटते हाथ में भी लग जाती है, अंगूठा कट जाता है। He sells any excess fragments for 13 cents a pound to factories that grind them up and sell them as fertilizer. Then he shaves down the bone pieces with an electric sander. इसको फ्लैट कर रहे हैं ताकि हमें एक दूसरे में चिपका सकें। Electricity is expensive and sometimes unreliable in this part of India, so not all bone carvers can afford to run tools like these. The Akhtar family says that's part of the reason many have left the craft. These pieces will later be glued together to form a lampshade. But first, Jalaluddin needs to boil them with baking soda. अब इसका हमें ऑयल निकालना है इसको वो। They cook for 3 hours. जितना ऑयल था सब निकल गया है। अब इनको हम जो है सुखला रहे हैं छाही में, यानी पंखे के नीचे। अब ये सूख जाएंगे तो हमें ये एक दूसरे में चिपका देने हैं इस तरह से। He files down the edges so that they align when he glues them together. In the past, there were workers who specialized in this step. But now, Jalaluddin has to do all the processes himself. Once the glue is dry, he drills tiny holes to create a piece called the net. He used to do this by hand, but the drill press has made the process much more efficient. अब जो हमने ये किया है 5 मिनट में हमने किया है, अगर हम ये हाथ से करते तो कम से कम 20 मिनट लगते हैं इसको बनाने में। Then he submerges the bones in hydrogen peroxide to clean them. जैसे हमारे डॉक्टर वगैरह जो है जख्म साफ करते हैं। Normally, the pieces lay out in the sun to whiten, but when it's rainy, Jalaluddin uses a light bulb instead. अब ये 6 घंटे ये जो है चलता रहेगा, जलता रहेगा, और इसी गर्मी से जो है अंदर ये जितने पीसेस हैं हमारे सब वाइट हो जाएंगे। He polishes each piece with this buffing machine. And then puts all the parts together to create the shape of a lamp. Some designs call for different tools, like this one. The artisans hand make it themselves. हम लोग छाते की तीली से बनाते हैं। पहले छाते की तीली लाते हैं, उसको घिसते हैं, फिर उसमें दाने काटते हैं, फिर धार लगाते हैं, फिर एक लकड़ी का वो होता है बेटी, उसमें ठोक करके फिर वो जाके औजार तैयार होता है और उससे जाली बनती है। Akheel is one of Jalaluddin's 3 sons. He's hand carving holes with the help of a wooden anvil. समझिए बोन कार्विंग में काम करने के लिए ये बहुत मेन चीज़ है। ये ना हो तो बोन कार्विंग काम बहुत करना मुश्किल है, बिकॉज इसके ही सारे हाथ वाले काम होते हैं। क्योंकि The block keeps the piece in place while workers carve. They used to fix the wooden blocks into the ground,
But over time, they started using a stone to weigh down the block instead. अगर आप मिट्टी में ये चीज़ गाड़ते हो लकड़ी को तो उसको कहीं ले नहीं जा सकते हो। अब इसको क्या आप कहीं भी उठा के ले जा सकते हो। Akheel learned the craft at 14 years old and won a state award at 18. But he wasn't always excited about the job. पहले तो हमें लगता था कि बहुत मेहनत है, कि पापा लोग को देखते सुबह 6 बजे से काम करना शुरू कर देते थे, रात को 1 बजे तक काम भी क्या करते थे। Now he sees potential in it. ये ऐसा कोई एंड नहीं है, आप कुछ भी बना सकते हो। दिमाग चलाते रहें, इम्प्रूवमेंट करते रहें तो कुछ भी बना, तो कोई सीमा ही नहीं है, कुछ भी बनाते रहिए तो और मज़ा आता है करने में। Akheel and his father work with just 1 or 2 other artisans who have different expertises. Jalaluddin Beg's specialty is engraving. ये सब मैं हाथ से ड्राइंग करता हूँ, कोई मेरे पास खाका नहीं है, कोई मेरे पास फरमा नहीं है। ये सब एक दूसरे से मोशन बना हुआ है, एक दूसरे को देख रहे हैं। Many bone carving designs resemble architecture from the Mughal Empire. 18th century buildings still stand from when the Muslim dynasty ruled India. Back then, royals commissioned artisans to carve ivory to their liking. But when the ivory trade was banned in the 1990s, carving bones from camels or buffaloes became a legal and cheaper alternative. The Akhtar family says their business peaked during the early 2000s with support from the government. Jalaluddin won a national award in 2012. And a couple years later, the government sent him to Brazil to show off his work. तो वहाँ पे जो है बहुत अच्छा है, यानी यहाँ से बहुत अच्छे पैसे वहाँ पे, कि जो चीज़ हम यहाँ 20 रुपये में बेचते थे तो वो चीज़ वहाँ 400 रुपये में खरीद रहे थे लोग शौक से। But soon after, the Akhtar said with a new administration, funding shrunk, and business hasn't been the same ever since. फिर उस काल में सरकार जब बदली भी धीरे धीरे वो गिरता चला गया। आज वो दौर हो गया है कि अब समझिए 30% काम होता है। Then in 2017, the government put restrictions on slaughterhouses and forced many of them to shut their doors, cutting off artists' bone supply. कम से कम यहाँ पे 5 से 6 कारखाने थे, अब वो धीरे धीरे करके एक कारखाना बचा है, बाकी सब खत्म हो गए। The raw materials became too expensive for such a small market. Some artisans went abroad for better work, and others didn't pass on the craft within their families. अब धीरे धीरे तो ऐसे ही लगता है कि आगे चल कर के 10-20 साल के बाद क्या होने वाला है ये तो पता नहीं है। Today, the Akhtar family teaches workshops to people in the community. It's part of the government's initiative to save the art. It pays for the students to attend the classes, and for the Akhtars to teach them. बोन कार्विंग अगर आज थोड़ा बहुत बची भी है तो इसमें सरकार का बहुत योगदान है। अगर सरकार ने ज़रा भी इंटरेस्ट ना लिया होता तो शायद बोन कार्विंग ख़त्म हो गई होती। And while the pandemic has slowed down classes and regular business, it's also given the Akhtars time to develop new designs, like this lamp. It sells for around 12,000 Indian rupees, or $200. They export most of their products to foreign customers. This is one of their most rare and expensive pieces. It's a perfume holder made from camel bone. They crafted it 30 years ago and just recently sold it for $1,200 to an art collector. और इतना बड़ा प्रॉफिट हो नहीं पाता कि मार्केट भी कम है बोन कार्विंग की, कि इंडिया में अभी डिमांड कम है और ऑर्डर भी कम रहते हैं, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत आती है, इसीलिए बहुत सारे कारखाने बंद हुए। Akheel is hoping to start selling their work through social media. फ्यूचर भी ऑनलाइन पे ही सारा, क्योंकि ज़्यादातर मार्केट ऑनलाइन आ चुकी, तो हम अपने प्रोडक्ट को भी ऑनलाइन भी अपने लेवल पे धीरे धीरे ला रहे हैं, पर उम्मीद है कि सारे प्लेटफॉर्म पे इंशाल्लाह ज़रूर लाएंगे। And the Akhtars don't plan on stopping anytime soon. काम मैंने इसलिए सीखा बिकॉज ये जो आर्ट थी हमारी ख़त्म हो गई थी, कारीगर काम छोड़ चुके हैं, कुछ रिक्शा चला रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं। अब हम लोगों ने क्या किया है कि अब इसी में करते हैं, इसी में रोजी रोटी हमारी वही यही है।